Hello students, welcome to RT Academy. We are going to learn today about the mechanical properties of the solids और हमारा आज का जो सब topic है that's going to deal with the elasticity modulus. So let's start this fun lecture. Now, first of all, the solids are characterized by the property of the elasticity. So the core article of the today's session is going to be based upon the article of the elasticity. Now, elasticity is also exhibited by the fluids. पर आज के सेशन में वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट अबाउट द इलास्टिसिटी मॉडुलस रिगार्डिंग द सॉलिड्स. सो व्हाट आर आवर लर्निंग गोल्स फॉर टुडे? क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द डीफॉर्मिंग फोर्सेस और फिर एज अ रिएक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रीस्टोरिंग फोर्सेस arising inside the materials which gives rise to the property of the elasticity. और इस elasticity को किस तरीके से हम पढ़ेंगे उसके लिए हमारे पास टर्म है दैट्स द elasticity modulus based upon a law. फिर वेराइटीज ऑफ द इलास्टिसिटी मॉडुलस के ऊपर हम ध्यान देंगे जैसे कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. सो दीज आर अवर लर्निंग गोल्स. लेट्स पिक अप वन बाय वन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट व्हाट इज अ डीफॉर्मिंग फोर्स. नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ डीफॉर्मिंग फोर्स, तो द वर्ड व्हिच एक्चुअली एक्सप्लेन्स टू मी इज डीफॉर्म. अब डीफॉर्म का मतलब बड़ा सिंपल है, दैट इज टू डिस्ट्रॉय द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टिकल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉर्म? तो फॉर्म का मतलब होता है शेप एंड साइज. तो अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जिसमें ये एबिलिटी है कि वो किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर पाए, उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर पाए, तब उस पर्टिकुलर फोर्स को हम डिफाइन करते हैं एज अ डीफॉर्मिंग फोर्स. जैसे कि आप सामने फिगर पे देख सकते हैं दैट यू आर अ बॉल, बट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स यू वर एबल टू डी शेप दैट पर्टिकुलर बॉल एंड हेंस द applied force जो कि हमने बाहर से अप्लाई करी, एक्सटर्नल फोर्स वाज टर्म्ड एज अ डीफॉर्मिंग फोर्स. तो क्या अब वो जो मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या वो इसका बदला नहीं लेंगे या वो इसको अपोज नहीं करेंगे? डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल कि वो किस तरीके से अपोज करेंगे. तो उस ऑपोजिशन बिहेवियर को हम डिफाइन करते हैं एज अ रीस्टोरिंग फोर्स. तो रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है अंदर से कुछ ऐसी फोर्सेस का होना जो कि ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने में मदद कर पाए. Such kind of the forces which are coming from interior of an object is known as a restoring forces. So restoring forces are basically internal forces which try to or tend to restore the original configuration of the object once external deforming forces are removed. जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम स्प्रिंग का एनिमेशन देखें, सो व्हाट वी ट्राइंग टू डू इज कि हम स्प्रिंग को एक्सपैंड कर रहे हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच के सेपरेशन को चेंज कर रहे हैं, उनकी शेप को खराब कर रहे हैं, डिफॉर्म कर रहे हैं, उसको साइज को चेंज कर रहे हैं. सो देन देयर इज अ नेचर ऑफ दैट मटेरियल. अगर मान लेते हैं कि वो स्टील से बना है, सो डिपेंडिंग अपॉन the material there are going to be the internal forces coming into play which are going to oppose the deforming forces. और उनका एक्शन आपको तब दिखेगा जब आप deforming forces को अगर रोक देंगे तो ये जो restoring forces हैं वो उसको अपने mean position पे वापस ले आएंगे. So a spring action is going to be one of the easy ways to explain the working of the restoring forces. Right. So restoring forces जो होती है material के अंदर, they give rise to the property of the elasticity. So what is elasticity? It is a property. It's an internal property of a matter, object, due to which it is able to regain its original configuration. So elasticity is supposed to be known as a property due to which a matter या फिर हम बोल सकते हैं object is able to restore its original form या configuration. और ये क्यों हो पा रहा है? The reason for the elasticity is because of the existence of the restoration behavior. That means the existence of the restoring forces or the restoring torque. So they are able to provide the behavior of the elasticity.
Now, it depends upon the material to material. That means it is kind of characteristic of a particular material, that whether it is able to actually regain the original form completely or partially, or may it remains in the modified form. So, which means that all the objects are not of the same elasticity. So, when we talk about a perfectly elastic object, what does it mean? That means it is able to restore its original configuration completely. So, perfectly elastic object means an object which regains its original configuration or original form completely. So, these are termed as a perfectly elastic. All the materials are not that lucky. So we have semi-elastic materials and we have the perfectly plastic materials. So what are going to be the perfectly plastic materials, which will remain in a deformed form? And this will actually create the difference between three kind of the materials: elastic, semi-elastic, and perfectly plastic materials. Now this can be explained via a spring ball model, in which we can assume that in a cubical structure, which is known as a unit cell, you can see that the vertices over there are able to be denoted by the molecules and atoms, and they are connected via springs. That's assumed कि जितने भी atoms और molecules हैं इनके बीच में हम springs को assume कर लेते हैं, which means that what can happen, either you can compress this structure or you can expand this structure. इसका मतलब springs जो हैं इन molecules के बीच में वो एक तरीके से इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का काम करेंगे. तो अगर आप इनको खींचोगे, एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे, so they are going to try to create an attractive force towards each other, and hence try to bring the structure back to the original form. और अगर आप इसको compress करने की कोशिश करोगे, so in that case again it is going to generate a compressive forces internally, जिसकी वजह से वापस से ये अपने original form को लाने की कोशिश करेंगे. This can be better explained through the potential energy intermolecular separation curve, where this is PE, that's the potential energy versus intermolecular separation curve. Now this particular curve explains this idea. Now, if I look at the lowest part of it, which is known as a potential well. So at a potential well, the equilibrium separation is there. R naught को हम क्या बोल रहे हैं? Equilibrium separation. मतलब इस particular diagram में ये distance क्या है? R naught. That's intermolecular distance. Now what happens in this condition? The slope of the curve is 0. Since the slope is 0 over here, and I know that F is equal to minus of du upon dr. So the slope means a du upon dr, which is 0. So the force over there is 0. Which means when does a force comes alive? जब बाहर से आप इसके ऊपर deforming force लगाओगे, इसका मतलब या तो आप इसको compress करोगे या expand करोगे. So I pick up two regions over there. Let me pick on the graph this particular point and this particular point. So what is happening over here? I can see that the R is supposed to be less than R naught. इसका मतलब आपने इसको compress कर दिया है. और कंप्रेस करने की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है. हमें कैसे पता चलेगा? That is by constructing the slope over here. So the slope explains that the force is equal to minus of the slope, but the slope over here is negative. So the force over here becomes positive, and a positive force is always denoted as a repulsive. तो जब आप किसी चीज को कंप्रेस करोगे तो वो क्या करेगी? रिपल्सिव बिहेवियर शो करेगी ताकि वो ओरिजिनल फॉर्म में आ पाए. And on a similar note, if you take the point towards the right where the R is more than R naught, इसका मतलब आपने इसको एक्सपैंड करा और यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन इंक्रीज हो गई है, तो फिर से क्या होगा? यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी. तो अगर आप अब इसका बिहेवियर चेक करेंगे, सो द फोर्स इज वंस अगेन माइनस ऑफ द स्लोप, पर यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है? पॉजिटिव है. तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स का जन्म होगा, क्योंकि आप किसी चीज को बाहर खींच रहे हैं तो वो आप पास में आना चाहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे ताकि वो ओरिजिनल शेप को अचीव कर पाए. तो यहां पे उसको हम टेंसाइल बिहेवियर बोल सकते हैं, और यहां पर हम उनको कंप्रेसिव बिहेवियर बोल सकते हैं. And it explains to the existence of the restoring forces when you are disturbing it from the equilibrium separation. This is known as a spring ball model to explain
the elasticity. That means this object is elastic, since it is able to try to restore it and make it back to stable position, which is the potential well, जहां पे equilibrium separation कितना है, R naught है. So the spinning ball model and the potential energy intermolecular curve beautifully explains the idea of the elasticity. Now, to explain this in a further terms, कि हम इसके numerical समझ सकें, हम differentiate कर सकें different materials के बीच में, we need to introduce some of the terms in the article. The first of that term in the analysis is going to be the stress. Now, what is stress? The stress is the force per unit area which develops whenever there is a force. Now, which kind of the force? Now, at a first view, हमें ऐसा लग सकता है कि stress का मतलब होगा deforming force upon area. ऐसा लग सकता है हमें. But in fact, it is a reverse. The stress is supposed to be the restoring force upon area. And why so? Because if something lets it to be deformed, तो उसमें stress नहीं आएगा. Stress तब आएगा when it tries to restore. So when it tries to restore, then it develops the stress. So hence, remember that the stress is supposed to be defined as a restoring force upon area. Now let's take it for an example when I'm talking about कि हमारे पास एक रॉड हो और मेटल की रॉड हो और हम उसको हीट करें और वो एक्सपैंड कर गई. So it got expanded, तो उसके डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे. बट दैट्स अ फ्री एक्सपेंशन, तो उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स थी ही नहीं, दैट बिकॉज इट हैप्पीली एक्सपैंडेड and therefore there was no stress in that particular expansion. But if there is a kind of restoring force, जैसे कि हमने देखा स्प्रिंग बॉल मॉडल से, then that object develops a stress. So हम स्ट्रेस को किसी सिंबल से सिग्मा से डिनोट कर लेते हैं, and so sigma can be written as equal to F upon A. Now the point is, what is that A? So you can see in the diagram towards the right, the A is taken as a cross-section area. How do we check that? We just slice it perpendicular to that particular force and we are able to see that this is a cross-section area. इस केस में ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक सर्कुलर लग रहा है. अगर वहीं ये कहीं एक बार शेप का ऑब्जेक्ट होता, एक रेक्टेंगुलर बार शेप का ऑब्जेक्ट होता लाइक दिस, इन दिस मैनरिज्म, और फिर हमें इसका क्रॉस सेक्शन चेक करना है, सो वी आर एबल टू डू दैट. So that is going to be the cross section area of it. So that's F upon A, and A is a cross section area, right? So now this stress, how it developed? So it developed by the application of the force, and then how the force was applied. So now we have to see that. So जो भी हमारे पास रेफरेंस एरिया है, अगर फोर्स इसका परपेंडिकुलर लगी है, रिपीटिंग अगेन, जो भी हमारे पास रेफरेंस एरिया है, अगर फोर्स इसका परपेंडिकुलर लगी है तो हम उसको डिफाइन करते हैं एज अ नॉर्मल स्ट्रेस. सो ओवर हियर दिस पर्टिकुलर फोर्स व्हिच इज अप्लाइड विल बी डिफाइंड एज अ नॉर्मल फोर्स, क्योंकि उस एरिया के परपेंडिकुलर लगी है, इसको भी हम नॉर्मल फोर्स ही बोल रहे हैं. और जो स्ट्रेस ऑब्जेक्ट में डेवलप हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस. सो वेरी क्लियर दैट अ नॉर्मल स्ट्रेस, हम उसको अब सेग्रीगेट कैसे करें? सिग्मा सबस्क्रिप्ट n लिख लेते हैं, which is equal to the normal force divided by the area. Simple. अब जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसके भी वेराइटीज हो सकती हैं. That a normal stress can be further classified as a tensile stress and a compressive stress. Now, what is the meaning of the tensile stress? जब नॉर्मल फोर्स एक पुलिंग एक्शन को एग्जिबिट करे, जैसे कि आप इस डायग्राम में चेक ऑन कर सकते हैं. That a force which is applied from both the ends is a pulling force. उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रही है. So the nature of the restoring force is going to be the tensile restoring force. And since it acts upon a particular cross-section area, as we are able to see in this particular diagram, so hence that particular stress is defined as what? The tensile stress. Of course, it is a form of a normal stress. Force आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा रेफरेंस एरिया है, यहाँ पे जो फोर्स है वो उसके परपेंडिकुलर ही है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस ही है. पर क्योंकि ये पुलिंग बिहेवियर से आई है, तो hence it is supposed to be defined as a tensile stress. So tensile stress basically comes from a pull action. हमें पता है कि जो फोर्स होती है या तो वो पुल और पुश होती है, so this is coming from the pull action. And so how do I write that?
So I simply write this as the sigma n as equal to F upon A. That's it. That's the form of the normal stress itself. पर हाँ, कई बार क्वेश्चन ये चेक ऑन करने की कोशिश करेगा कि आपको पता है कि नहीं कि किस फॉर्म का नॉर्मल स्ट्रेस है. सो दैट्स वेरी इजी. दैट इज सपोज टू बी द टेंसाइल स्ट्रेस बिकॉज इट इज अ पुल एक्शन. नाउ सपोज आई गिव एन एग्जांपल ऑफ इट. तो मेरे पास एक वायर है और उस सिलेंड्रिकल वायर के नीचे वी हैव अप्लाइड अ लोड ओवर हियर लाइक दिस. नाउ ये जो लोड हमने अप्लाई करा है दैट इज mg इज गोइंग टू create a force in this direction. But that force is supposed to be nothing but the weight of this object. इस weight की वजह से इस वायर में stretch produce होगा. And so there is going to be some stretch produce in this. Stretch produce होने की वजह से अंदर restoring nature आएगा. And so there is going to be the development of the tensile tension force inside this. So when I'm going to write the value for that tensile stress over there, so that is going to be equal to T upon area. Now which area? That is going to be the cross section area. That is perpendicular area to that particular force. So in this example, that is equal to the area of that cross section of the wire. So I can write this as pi r square. And so that's the understanding of the tensile stress. One more thing. In this equilibrium, तो जब भी हम रीडिंग लेंगे तो इक्विलिब्रियम में लेंगे कि कितनी एक्सटेंशन है. सो इक्विलिब्रियम में जो टेंशन की वैल्यू है वो mg के बराबर है. सो दैट मीन्स फॉर द कैलकुलेशन पर्पस यू कैन राइट दिस एज इक्वल टू mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, बट दैट मस्ट नॉट प्ले विद योर कॉन्सेप्ट. एज आई सेड, द स्ट्रेस इज गोइंग टू कम फ्रॉम द रीस्टोरिंग फोर्स एंड दैट्स द पॉइंट कि जो टेंशन है वो क्या है, इट्स गोइंग टू बिहेव एज अ रीस्टोरिंग फोर्स. And therefore, do remember that the stress always arises from the case of the restoring forces. Simple. Now, whenever we talk about the force, it is going to be a pull action or a push action. तो हमने pull action की तो बातें कर ली, तो फिर push action की भी बातें करनी चाहिए. So when you're going to talk about a push action, तो इसका मतलब कि मान लेते हैं कि हमारे पास अगर ये एक बार है और हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. पर फोर्स कैसे लगा रहे हैं? In this particular format. So it's kind of a compressive force, or we can say it's supposed to be a push action. तो क्या होने वाला है कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वहां से फोर्सेस डेवलप होने वाली हैं. एंड दैट फोर्सेस अगर मैं इसको दो अलग अलग सेक्शंस में बना लूं, so let me take this as one section now and similarly take this as a second section now. So if I'm able to create that and check, so what I'm able to see at the cross section. So at this particular cross section, the forces are going to be acting in this mannerism. These are going to be the restoring forces, which are going to oppose the externally applied force. अब मैं इन particular forces को क्या बोलूंगा? They are supposed to be the compressive forces. They act as if they are repelling. और यहाँ पे जो nature of stress है मैं उसको क्या बोल लूंगा? That is going to be the compressive stress. So that's a compressive stress. Now, shall I give an example for that? Suppose you have a table. Now a tabletop is going to be supported by the pillars. आपके घर में center table होगी. So you can see over there that it is going to be supported, let's say, by the 4 pillars. So now this particular tabletop will be having some weight. So now let's say the mass of that particular tabletop is m. So it is going to exert a weight mg over here, which is basically going to create an equivalent force on each of the pillar, because the pillars are strategically actually placed symmetrically. So each one of it shares a load of mg by 4, and then they have an area over here. So they're going to talk about a compressive stress in this condition. So then the compressive stress in this particular condition on each pillar is going to be that particular force, which is equivalent to, because it is going to create a pressure here. So that is going to be the normal reaction which is going to come over there, which is going to behave as a restoring nature, whose value is supposed to be as equal to mg by 4. So that's mg by 4 and divided by the area, where that area is standing as equal to pi r square once again. So I explained to you beautifully the idea of the normal stresses. Now,
A normal stress can also become uniform sometimes. Let's suppose you are having a ball and now you crush that particular ball from all the sides. So you are applying the force uniformly, not on a particular face. To explain that particular idea, you can examine a cube, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है. अब आप देखो कि उसके ऊपर फोर्स कैसे लगाई है, सभी डायरेक्शन में सभी फेसेस पे लगाई है. सच ए काइंड ऑफ द परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड. आप देख सकते हैं किसी भी फेस से जो फोर्स अप्लाइड है वो परपेंडिकुलर है. तो such kind of the perpendicular force applied on all the faces is going to develop what? A uniform normal force and going to give us what? A uniform stress. So that's an idea of the uniform stress. So एक तरीके से हम इसको 3D stress भी बोल सकते हैं, right? और ये normal stress का ही form है. And in this case it is looking like tensile, क्योंकि इससे ये volumetrically expand हो सकता है object, and can be seen in the case of this ball also, that you can actually try to compress this ball in this particular mannerism. तो उससे क्या होगा, इसका पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा. तो वही यूनिफॉर्म स्ट्रेस अब कैसे बिहेव करेगा, एज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस. ग्रेट. नाउ let's talk about the other nature of the forces. The other nature of the forces are going to be defined as a tangential or the shear forces. Now this particular diagram very well explains the idea in the case of the shear forces. Now I'm going to give you something which is going to be very cool. When I'm going to talk about a form, तो फॉर्म का मतलब हमने सीखा था शेप एंड साइज होता है ना. तो अगर मैं बात करूं कि मैंने स्ट्रेस को समझा, तो स्ट्रेस दो तरीके के हैं, एक है नॉर्मल स्ट्रेस और एक है शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस का दूसरा नाम टेंजेंशियल स्ट्रेस. मतलब मैंने फोर्स कैसे अप्लाई करी है, टेंजेंशियली अप्लाई करी है. सो इट्स अ टेंजेंशियल स्ट्रेस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास अगर ये एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है और मैं अगर ऊपर वाले सरफेस की बात करता हूं, लेट मी टॉक अबाउट द अपर सरफेस, this particular surface, and I try to apply a force on this. So I applied a force on this. So how did I apply the force on this area? The force which is applied on this particular area is supposed to be tangential to that particular surface. Let me name that surface, let's say A, B, C, D. So which means that tangential stress over there is equal to that force, which is a tangential force, and divided by that area of that face, which is the area of the face ABCD. Simple. So what does it do? It basically actually changes the shape of it. You can see a normal cuboidal structure, because of the application of this particular force in a tangential direction, becomes like a parallelopipe. Now why did it happen? Because the force was applied selectively on the upper face and not on the lower face, which can be labeled as a PQRS. So there is a relative movement of the upper layer, upper surface, with respect to the lower surface, and that causes a deformation with respect to the shape. While when we are talking about a wire और उसके नीचे आपने वेट लगाया, तो क्या हुआ, उसकी लेंथ इंक्रीज हुई, इसका मतलब उसका साइज चेंज हुआ, पर वो वायर रही सिलेंडर ही, तो उसका शेप नहीं बदला. सो व्हाट डू आई लर्न फ्रॉम दिस आइडिया? I learned from this particular idea that when I'm talking about a change in the size or the dimensions, I'm going to talk about the normal stresses. Normal stresses means the tensile stresses, or I'm going to talk about the compressive stresses. और अगर मैं shape changes की बात करता हूं, so then I'm going to talk about what? The tangential or the shear stress. है ना beautiful idea? अपने अपने रोल्स हैं. हम बोलना चाहते हैं कि भाई किसी चीज का पूरा फॉर्म बदल गया, इसका मतलब उसमें फिर टेंजेंशियल और नॉर्मल स्ट्रेसेस दोनों होंगी. अगर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है तो सिर्फ उसका साइज बदलेगा, और अगर सिर्फ shear स्ट्रेस लग रही है तो इसका मतलब सिर्फ उसका शेप चेंज होगा. सो ग्रेट आइडिया टू अंडरस्टैंड द फॉर्म. So overview. So you can see the overview over here. So you're able to see that with respect to the area, understand, with respect to the area, so that is your kind of the cross section area. With respect to that, you are able to apply the force perpendicular. So perpendicular में दो cases हैं. If you are having a pull action, you are having a tensional stress coming into play, and if you are applying a push action on the same area, you are seeing a compressional stress going to come into play. And then what I'm able to see that the forces are applied
tangentially to that particular surface, and so it is going to develop what? The shear stress. So that's an overview of the stress article. Now, when our object is subjected to the stress, so it causes either a change in the shape or the change in the size or the dimensions. So now we are interested in measuring how much amount the size was change या फिर उसके shape में कितना change हुआ. So to measure that idea कि how much change was there, we introduce a second term relevant to the topic, and that's known as a strain. Strain is of various types. So first of all, let's talk about the linear strain, or more common language is known as a longitudinal strain. So longitudinal strain can be considered as a type of the linear strain. अब ये कैसे डेवलप हो रहा है? इट इज डेवलपिंग इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनरिज्म. तो आप देख सकते हैं कि एक रॉड है और आपने क्या करा, इसके दोनों एंड्स पे फोर्स अप्लाई कर दी यूनिफॉर्मली. नेट फोर्स जीरो है, देख सकते हैं, पर दोनों एंड से उसको खींचा है और ऐसा करने से उसके लेंथ में इंक्रीमेंट आ गया. कितना आ गया? ये इंक्रीमेंट आ गया. मैं उसको डेल्टा लिख सकता हूँ. सो नाउ दिस इज अ रिलेटिव इंक्रीज इन द लेंथ. रिलेटिव इंक्रीज इन द लेंथ का मतलब जितनी चेंज इन लेंथ आई है रिलेटिव टू द ओरिजिनल लेंथ. So when I'm going to talk about the longitudinal strain over there, so the longitudinal strain is equal to that delta L upon L. So it can be also labeled as a 1D strain. When I'm able to see that the force which was applied was supposed to be perpendicular to the area of the cross section. So the nature of the stress is normal stress, and further in this example it is also acting as a tensile stress. The lower figure is a very interesting one, which I will focus upon at the later stage. But what's so interesting in that? We're able to see that there is a 2D kind of strain coming into play. We're able to see that when you are stretching this particular wire, there is an increment in the length, understood. But simultaneously, there is a decrease in the radius. So when I'm defining the longitudinal strain, so I'm talking about the increment in the direction of the force applied. So you can see the direction of the P, that's the force in this scenario. और उसी डायरेक्शन में मैंने क्या करी है, जितनी भी चेंज हुआ है लेंथ में उसको मेजर करा है. So then that particular form of the strain is known as what? Longitudinal strain. When I'm looking at the changes perpendicular to the force applied, तो मैं उस particular strain को linear strain का नाम नहीं दूंगा, lateral strain का नाम दूंगा. और जो lateral strain है उसको हम मेजर कर सकते हैं as the change in the diameter or the change in the radius. So that's measured as equal to delta R upon R. That's a change in the direction which is perpendicular to the applied force. ये भी 1D strain है. Radius is also measured in a one dimension itself. हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो लेंथ इंक्रीज हो रही है और रेडियस कम हो रहा है. सो कई बार जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो फिर एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव लिखेंगे. तो फिलहाल के लिए मैं इसको मॉडुलस से लिख लेता हूँ. राइट. सो दैट्स व्हाट अ लीनियर स्ट्रेन फॉर यू. Now that's not the only kind of the strain. So I have another strain with me, and that's known as a volumetric strain. Oh, that looks like कि मैंने उसके ऊपर यूनिफॉर्म स्ट्रेस लगाया हुआ है. So you got the point. कि जब आप यूनिफॉर्म स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो चेंजेस होंगे ऑब्जेक्ट में वो कैसे होंगे? वॉल्यूमेट्रिक होंगे. तो स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. और कैसे लिखेंगे? डेल्टा V अपॉन V, सिंपल. So that is also coming from the idea of the normal stress, but from the uniform stress. Now the third kind of the strain is known as a shear strain. And how does the shear strain comes into play? When you are applying the tangential force. You are able to see that कि हमने यहाँ पे जो force apply करी है वो कैसी है? Tangential force है. So the nature of the stress which is coming into play is a tangential stress. और हो क्या रहा है अगर आप ध्यान से देखें इस इवेंट में, तो मैं एक रेफरेंस पॉइंट O ले लेता हूँ. इसके अबाउट ये फोर्स एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है. इस टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से देयर इज काइंड ऑफ अ रोटेशन प्रोड्यूस ओवर हियर. तो एक शेप में टर्न आ रहा है. फील दैट. तो कितना टर्न हुआ कैसे देखें? तो ये एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं कि ये लाइन पहले स्ट्रेट थी, लेकिन फोर्स अप्लाई करने की वजह से लाइन जो है वो टिल्ट हो गई है. वो जो लाइन है वो ऐसे हो गई है, मतलब इसके अंदर एक एंगुलर रोटेशन आ गई है. तो जितने एंगल से वो लाइन रोटेट करी है अबाउट द पॉइंट O, दैट इज अ मेजर ऑफ द शियर स्ट्रेन. सो कई बार उसको एंगल ऑफ शियर भी बोला जाता है, तो हम उसको थीटा से डिनोट कर सकते हैं. नाउ लेट्स से दैट दिस पर्टिकुलर increment is supposed to be as delta x,
right? And I can use that. This tan of theta from here is equal to delta x upon h. It looks like that. But since the deformation is very small in the case of the rigid objects, and therefore the tan theta can be approximated at theta, so it is simply written as equal to delta x upon s, or sometimes simply as x upon h, where x is the linear distance which is shifted by this point. Let's say this point is P and is shifted to this particular point P dash. So these are the three kind of the strain produced due to the two kind of stress, that is a normal stress and the shear stress. So that was the content of the today's session, this particular session, in which we learned about the two terms which are essential to understand the elasticity, that is a stress and a strain. Hope you enjoyed the session. Lots coming ahead. Thank you.